Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. I hope you're all well. I've got this gorgeous tutorial for you today and this is a really in-depth tutorial. So ये बहुत लंबा tutorial होगा आज हर चीज़ मैंने सही तरह explain की हुई है ऑरेंज करेक्टर कैसे यूज़ करना और क्यों मैं इतना पसंद नहीं करती एंड जो क्रायलॉन का केक मेकअप होता है पैनकेक उसको कैसे इस्तेमाल मैं करती हूँ. So I'm going to be showing you how to use how I use orange color corrector and why I'm not really a big fan of it, and also how I use the Kryolan Pancake makeup. So I know a lot of you guys were interested in that, and that video I had to take down, so I'm showing you again in this video. So this tutorial will be in Urdu and in English. So यहाँ पे मैं स्टार्ट ऑफ कर रही हूँ. मैंने NYX का प्रोडक्ट यूज़ किया था. थिकिट मस्कारा जैसे होता है आईब्रोज़ के लिए, तो उससे ये होता है कि थोड़े से आपके जो बाल होते हैं ना वो थोड़े से सही शेप में आ जाते हैं. देन आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं अपना जो भी ब्राउ पेंसिल या अगर पॉमेड यूज़ करना है मैं यहाँ पे Kat Von D का यूज़ कर रही हूँ, उससे फिर मैं शेपिंग कर देती हूँ. So what I did is I just used a product from NYX, which is I think it's Stick It, I can't remember. I've got it in the box below, and so I just use that. So I don't always use it, but when someone's gone really fine eyebrows or they're not very dark, so that just helps it give it a little bit more. It just controls the hair a little bit, gives it a little bit of colour, and it looks a little bit thicker. And then what I do is I just go in with my pomade or my pencil, whatever I want to use. Here I use the Kat Von D gel, and I just brush in and shape the eyebrows a little bit. So next I'm going in with my P. Louise base as usual, and I'm using a synthetic brush. Again, I do have a video coming soon with all my brushes, so then you'll be able to refer back to that as well. It's just too much for me to do, to be honest with you, because I just pick up my brushes as I do and then I forget, and then I don't want to be telling you guys the wrong brush that I've used and things like that. So the makeup I normally write down or I show it in my video, so that reminds me. But all the brushes don't actually have numbers on them because I've had them for a while, some of them as well. So I will do a video. So यहाँ पे मैंने P. Louise का बेस इस्तेमाल किया है. एक फ्लैट ब्रश से इसको मैं लगाई जा रही हूँ. सो इससे मैं शेपिंग लेके आ रही हूँ. आईब्रोज़ करने के भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके हैं. आहिस्ता आहिस्ता वो भी आपको दिखाती रहूँगी. मेन तरीका ये मैं अपना यही इस्तेमाल करती हूँ. तो आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट ब्रश से मैंने प्रोडक्ट लगाना है. इसको पैटिंग मोशन से लगा रही हूँ. सारा जो एरिया उसको कवर कर रही हूँ. काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट है लेकिन फिर भी इतना नहीं होना चाहिए कि मतलब कि वो आपका आई शेडो है मतलब उसमें मिक्स हो जाए. तो आप देखेंगे बाद में कि मैं इसको फिर बाद में थोड़ा सा ब्लेंड भी कर देती हूँ. तो आपने टाइम लगा के ये करना है. यहाँ पे जो आईब्रोज मैं करती हूँ एक ही जैसे मतलब स्वाइप में कर देती हूँ. एंड देन अगर आहिस्ता आहिस्ता अगर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थिक है आईब्रो या उसकी फिनिशिंग सही नहीं है, फिर मैं दोबारा कर देती हूँ. So again, I'm just using a bit more product and I'm going around the eyebrows. I like to do this in one swipe, as you can see, so I don't normally lift my brush off, but you can do, it's not a rule. And then what I do is once I've done that, and then I'll go back in and I'll go a little bit closer and really shape that eyebrow a little bit. And then I go in with a fluffy blending brush and I'm just patting down any extra product, and I'm then going to go around all the harsh edges and blend them out. I do that because if you leave the product here while you're doing the eyes and things like that, when I come back to the base, basically there will be a little bit of a harsh line, and there's quite a bit of product there as you can see, so I don't want all that product there, so I'm just blending it all out. तो यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ एक फ्लफी ब्रश से. बस आई शेडो ब्रश है. प्रोडक्ट जो एक्स्ट्रा आईज पे है उसको भी मैंने ब्लेंड कर दिया, पैड कर दिया. एंड यहाँ पे जो हार्श एजेस है इसको भी मैं ब्लेंड कर देती हूँ, क्योंकि अगर इसको छोड़ दूँगी दैन यहाँ पे ना हार्श एज आ जाएगी एंड जब मैं मेकअप करके जस्ट बेस करूँगी तो वो नज़र आएगी, वो अच्छी नहीं लगेगी. तो यहाँ पे मैं अपना जो फेवरेट पैलेट है ये है जैकलिन हिल का वॉल्यूम 1. यहाँ से एक प्रोडक्ट ले रही हूँ जो ये कलर है जैसे ऑरेंजी ब्राउन सा है. आउटर कॉर्नर्स में मैं इसको एक फ्लफ़ी ब्रश से टैप करके लगा रही हूँ. कोई स्वाइपिंग मोशन नहीं कर रही, आप देख सकते हैं. और एक एंगल से लगा रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा जो ऐसे मेकअप करती हूँ ना, ऐसे आउटवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा जैसे कैट आई जो शेप होती है ना वो लेके जाती हूँ. एंड इस ट्यूटोरियल में वही आपको दिखा रही हूँ. सो आउटर एजेस पे इसको लेके जा रही हूँ, लेकिन इसका एंगल देखे कि हाफ आई पे आ रही है, मतलब मैं सीधा नीचे नहीं जा रही, मैं इसको अक्रॉस लेके जा रही हूँ. एंड आप देखेंगे कि इसको बस मैं टैप करती जाऊँगी जब तक मैं इसके कलर के साथ खुश हूँ.
So now I'm using a fluffy brush and I'm using my palette, which is one of my favorites, which is a Jaclyn Hill Volume 1 palette. If you want one palette, I would suggest this one for you to get because you can create so many different looks. I'm patting on the look, the eyeshadow now. So if you notice, I'm actually just patting it on and then I'm bringing it across the eye. Now, this is the kind of eye makeup I do a lot of. Not everyone does it like this, but this is one of my favorite ways of doing it. So you can see I'm not actually going just downwards or in the socket area. I'm going quite a bit higher and then I'm bringing the angle like halfway across the eye. So that gives me a nice blend. And then slowly, once I can feel that it's not very tacky, I can just blend it out a little bit, and that's what I'm doing there. And then next I'm going to go in with a darker shade, same palette. I've changed my brush, I've got a slightly smaller, denser fluffy brush now, and I'm patting this on again. Again, look at the angle that I'm using. I'm going from outer and then I'm going across the eye a little bit, but just beneath the very first colour that I've used. तो यहाँ पे पहला कलर जो मैंने है वो लगा दिया है, फिर मैंने एक छोटा फ्लफ़ी ब्रश लिया है और उसी पैलेट से एक डार्क ब्राउन ले रही हूँ. अगेन इसकी आप प्लेसमेंट देखें कि मैं कैसे कर रही हूँ. ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें, ऑब्वियसली आप अपनी पसंद की प्लेसमेंट कर सकते हैं. अगर आपको ऐसे नहीं आई शेडो पसंद तो आप इसको थोड़ा सा नीचे ले आएँ या सिर्फ सॉकेट एरियाज़ में रख सकते हैं. ऑब्वियसली अपनी टेक्निक देखनी है, लेकिन जो मैं पर्टिकुलर लुक दिखा रही हूँ वो ये वाला दिखा रही हूँ आज. तो इसको आपने ब्लेंड करते जाना है. पहले पैड कर रही हूँ, इसको लगा रही हूँ कलर को, फिर साथ साथ ब्लेंड कर रही हूँ जब मुझे कम प्रोडक्ट लगता है. एंड देन आपने वापस जो पहला कलर यूज़ किया था ना वो दोबारा आपने करना है कि थोड़ा सा हल्का सा वहाँ पे ब्लेंडिंग सही आ जाए. So then I always go back in with my first brush and my first colour just to blend out the harsh edges, so you can see the difference that it makes once you've added that on. So you have to spend your time on doing this. Now these kind of like steps, obviously this tutorial is quite lengthy by the way, because I'm going through everything step by step, but there are bits that are missing, so obviously I do cut it up a little bit, so I'm spending a lot more time actually when I'm doing this blending. So then I'm just getting another gold, and this is from the same palette, and I'm just using my finger to add this on. The reason I'm not fussed with the gold here too much is because I'm actually going to go over it with some glitter, so I just wanted like a basic gold that I need, and then I can go on with my glitter. So यहाँ पे मैंने उसी पैलेट से गोल्ड लिया है, फिर इसके ऊपर मैं ग्लिटर लगाऊंगी, तो अपनी फिंगर की मदद से ही इसको लगा रही हूँ. एंड इस तरीके से मुझे अच्छा लगता है. मैं मतलब ओवरलैप कर रही हूँ कलर्स को भी, एंड इसकी ब्लेंडिंग मुझे अच्छी लगती है ऐसे, क्योंकि मैं इसकी जो एजेस है साथ ही मैं ब्लेंड कर देती हूँ. And then I always go back in on the outer edges again, and then I'm just blending everything again, going in with each colour that I've used before and just topping it up and really blending it out. And this is how you get a really nice blend. So अब यहाँ पे जो obviously मैंने पहले कलर्स यूज़ किए थे वहाँ पे मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ. इस दफ़ा मैंने नया ग्लिटर यूज़ किया है, ये है टेक 2 कॉस्मेटिक्स. एंड ये जो है आपको खुशी होगी शायद, क्योंकि ये आपको पाकिस्तान में भी अवेलेबल है. ज़्यादातर जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ तो सब बोलते हैं कि पाकिस्तान में नहीं मिलता. ये अगर इनकी वेबसाइट पे आप जाओगे तो आप उधर क्लिक कर सकते हो, ये वहाँ से भी मिलता है. प्राइसेस मैंने नोट की थी लेकिन मैं भूल गई अभी इस टाइम पे कि कितने का था, लेकिन ये ग्लिटर बहुत नाइस थे. मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगी एक्चुअली, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर की, तो मैं आपको अपने कलर्स वगैरह दिखाऊंगी. तो बीच में मैं भूल गई थी कि मैंने आईलाइनर नहीं लगाया था. स्मोकीनेस जो मैंने करनी थी आई शेडो से ही मैं साथ किए जा रही हूँ. So I'm just adding on some black eyeshadow here. I was going to go with my glitter, which I've just shown you, but then I forgot that I'd already obviously not done this bit, so I'm just adding this on as well. Just a flat brush here. So the glitters are some new ones. I am going to do a separate video, probably show you, because they're really pretty glitters. And I stumbled across them, so I've ordered quite a few, so I might do a separate video just to show you. But they're available in England, and you can actually order them in Pakistan as well. You can just change the website, and there's a few other countries as well. But in my next video, when I do a video and I'll show you the glitters, I'll tell you how much they were and things like that. But they're really pretty. So here I'm just adding on my NYX glue. So I sometimes use a brush. A lot of the times I use my finger because I can feel whether I'm adding a lot or not. So I literally tap it on very lightly, so I'm not disturbing the eyeshadow underneath. Then I'm going to go in with a fluffy brush, and I just pick up a little bit of glitter and tap on. And I'm doing, you can hardly feel it on the eyes. I don't tap on too harshly here, because otherwise that's when you get patchiness. And then I just go back in again with a little bit more glitter just to cover any parts that I've got glue on. And you can actually, you just finish that off. These are really pretty glitters actually. I really like them. They're really fine as well.
सो पहले मैं अपनी ग्लू लगाती हूँ, NYX की ही ग्लू यूज़ कर रही हूँ, अपनी फिंगर से लगाती हूँ क्योंकि फिर थोड़ा सा मुझे फ़ील हो जाता है कि ज़्यादा है या कम है, कि बहुत पैची ना हो जाए। एंड देन एक फ्लफ़ी ब्रश पे अपना ग्लिटर उठा लूँगी एंड उसको बिल्कुल हल्के हाथ से, मतलब मैं बिल्कुल प्रेस नहीं करती, नीचे वाली जो आई मेकअप है ना उसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही होती, बिल्कुल हल्का हल्का करके ना तो वो लग जाता है। तो आप देख लें कि मतलब ये ग्लिटर्स बहुत नाइस थे। ये जो एक शेड बस गोल्ड सा यूज़ किया है, काफ़ी ज़्यादा मैंने ऑर्डर किए थे कलर, तो आपको दिखाऊंगी एक वीडियो में। अब जो ये आउटर कॉर्नर्स है ना इनको मैं ब्लेंड कर देती हूँ ग्लिटर के साथ, क्योंकि ग्लिटर मैंने काफ़ी मतलब पूरे आईलिड पे तकरीबन लेके गई हूँ। सो इसको ना यहाँ से जो ब्लेंडिंग होती है ये ज़रूरी होती है। So just to finish off, I always blend out the outer corners and the colours that I've added before, otherwise it looks really unfinished. Now these are the eyelashes I've been using quite lately, so I thought I'd show you. So these are from Plush Beauty, you can all grab these if you're in England and stuff. So it's the style was Valencia, so this has become quite one of my favourite eyelashes actually to use recently. I've been using a lot of tatty lashes, and this particular style I've been using quite a bit of as well. So I'm going in with vitamin C serum. This one was from La Roche-Posay, I think it was. But at the moment, just here, I'm just writing down vitamin C serum, only purely because there are so many brands out there. You don't have to use what I'm using. It's just look at the products and look at the techniques and then use the products that you want to. So you don't have to be spending a lot of money. I'm just using what I've got. I always say this in all my videos, and then I chop and change. So, you know, in a few videos afterwards, when I run out of this product, I might just pick up something cheaper, or you know, so it just depends. तो यहाँ पे मैंने विटामिन सी सीरम लगाया है, नाम मैंने नहीं लिखा है ला रोश पोजे का, लेकिन मैं ये सिर्फ लिखना चाह रही हूँ कि ओबियसली कि सिर्फ जो जो ब्रांड्स मैं यूज़ कर रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही यूज़ करें। मैं मतलब जब ये ख़त्म हो जाएंगे शायद कुछ और ले लूँगी, तो यू नो मैं डिफरेंट यूज़ करती रहती हूँ। फिर आई क्रीम लगानी है, जो भी आपकी मर्ज़ी है आई क्रीम आप लगा रहे हैं, क्योंकि इससे आपका जो है ना अंडर आई अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसको हाइड्रेशन चाहिए होती है। तो इसको आपने लाइटली बस टैप करके लगा देना है, लेकिन हर इस जो स्टेप मैं बता रही हूँ ना इसमें गैप होना चाहिए। मतलब ये दो चीज़ें तो कई दफ़ा मैं ज़्यादा एक के बाद दूसरा कर देती हूँ, लेकिन नॉर्मली बीच में ना एक गैप भी आता है। आप देखेंगे कि मैं बीच में आईलाइनर करती हूँ, आईलैशेस करती हूँ, इस टाइप की चीज़ें ना, तो फिर वो जज़ब हो जाता है स्किन में। सो नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ सन क्रीम। So every time I do these steps, I always mention that you need to leave some time in between. Now, when I do my vitamin C, I normally let that absorb in, and I do my eye cream, and then I normally leave it a few minutes. I'm normally sorting out the eyelashes, or I'm doing the eyeliner, or things like that. So here I've gone in with my sun cream. You don't have to do this step. I've only started doing this recently, but I find I know there's the element of protection, but apart from that, I just like the way the makeup goes on, so I actually use it for that purpose. So I've left the skin now in between. I just thought these are some bits that sometimes I leave out of my videos because I just think they're going to make it really long. So I've left the makeup now, the skincare, just to absorb into the skin, and now I'm going on to my lashes, and I've just, you know, I always curl my eyelashes as well, by the way, before I put them on, and then I've put the glue on and got those on, and now I'm just going in with a little bit of gel liner. So यहाँ पे मैंने आई लैशेज़ कर दी है, अपना जेल लाइनर लगा रही हूँ। ये हमेशा मैं पहले कर देती हूँ क्योंकि नॉर्मली आइज़ वाटर करती है या यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ज़्यादातर ये जो पार्ट है ये मैं मेकअप बेस करने से पहले ना कर देती हूँ, फिर बाद में टचअप कर देती हूँ। I always tend to do the eyeliner before I've got my base on because the eyes tend to water. There's always problems, or I might need to clean up a little bit, especially if I'm doing like black eyeliner. So I think it's good to get this out of the way at this point. So now that I've got all that out of the way, I'm going to go in with some moisturizer, any moisturizer you want to do. So यहाँ पे अभी ये सारा कुछ करके तो अभी मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। ये सारे जो स्टेप्स हैं ना आपको हेल्प करेंगे काफ़ी। मतलब मैं मेकअप देखती रहती हूँ कई दफ़ा, एंड यू नो काफ़ी केकी लगता है मेकअप जो मैं ज़्यादातर देखती हूँ। अगर वीडियोस में पिक्चर्स में केकी लग रहा है तो आप सोच लें कि कैसे लगेगा असल में भी। तो इसलिए ये जो सारे स्टेप्स हैं ना आप देखेंगे यहाँ पे मेरा मेकअप केकी नहीं लगता, ना ही रियल लाइफ में। मतलब जब मेरे लोग देखते हैं ब्राइड्स को ना, कभी भी वो केकीनेस नहीं ज़्यादातर आता। यहाँ पे मैं प्राइमर इस्तेमाल कर रही हूँ बेनिफिट का।
So I'm using the Professional Benefit primer here. Just look at how I'm actually applying it. I'm going in circular motions. I'm really getting it into the pores. So I just don't swipe it on. I really rub it in circular motions quite a bit in those areas. तो यहाँ पे कलर करेक्टर मैं कर रही हूँ एले गर्ल का ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ ना. इससे आप कम यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन मैंने आपको दिखाना था कि जब आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ करते हैं ना, तो आप इसके ऊपर बस आप लाइट कंसीलर नहीं लगा सकते, ना आप फाउंडेशन लगा सकते हो. इसको सही तरह करेक्ट करने के लिए ना यहाँ पे आपने ऑरेंज करेक्टर लगा रही है, एंड देन इसके ऊपर फिर जो आपके अपने स्किन का जो कलर होता है ना, या उससे थोड़ा सा डार्क वो लगाना पड़ता है. फिर आपने इसके ऊपर लाइट कंसीलर या फाउंडेशन लगानी है. तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक डबल स्टेप हो जाता है, क्योंकि जब मैं खाली एक अपना जो थोड़ा सा ऑरेंजी टोन का जो डार्कर कंसीलर होता है वो लगाती हूँ, तो वो मेरी प्रेफरेंस रहती है, क्योंकि एक कम प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं. तो इस वजह से मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ कि अगर मैंने यूज़ करना तो मैं ऐसे ही करती, लेकिन आई थिंक एक प्रोडक्ट कम हो तो बेटर है. So I've used an orange corrector here, but I just wanted to explain to you guys that when you use an orange corrector, you can't just go in then with a lighter concealer or your foundation. You have to then go over it with another concealer which is actually matching to your skin tone. So for me, that just makes it like an extra product and an extra step to do, and that's why I tend to go in with a corrector which is more a slightly orangey toned one, but it's a darker shade to your own, and then it just avoids having that orangey tone concealer on your face and that extra step really, and that extra product. So this is just something I thought I'd just show you quickly anyway. I'm going in with just one foundation today, and that is the NARS Longwear. यहाँ पे मैंने अभी नाज की लॉन्गवेयर फाउंडेशन इस्तेमाल की है. वन ऑफ माई फेवरेट फाउंडेशंस. इसकी कवरेज, इसका जो फिनिश होता है बहुत ज़्यादा नाइस होता है. यहाँ पे बाय द वे मैं आपको बताती जाऊँ कि कोई फिल्टर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है ऐसा. ये सारा मतलब इसका नेचुरल. एक मैंने रिंग लाइट बस लगाई हुई है ऑब्वियसली, क्योंकि नहीं तो नज़र नहीं आता और आपको ऑब्वियसली नज़र नहीं आएगा. लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने ऑब्वियसली कुछ नहीं है. मैंने कहा आपको बता दूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कई दफ़ा कमेंट्स आ जाते हैं कि आपकी वीडियोस अच्छी हैं लेकिन आपने फ़िल्टर लगाया हुआ होता है, तो मैंने नहीं लगाया हुआ, तो मैंने कहा आपको बता दूँ. सो इसको मैं ब्रश से ही लगा रही हूँ अभी. So guys, I just wanted to say there are no filters here or anything. Occasionally sometimes I might use them, and I'm not, I use them all over, like when I'm doing Instagram and things like that as well, but there's a certain limit I normally have. So they normally look flawless, my models do, my brides do as well, but obviously sometimes you do get into that phase where you do edit pictures and things like that, which there's nothing wrong with. Everyone's doing it, but here I just wanted to say that there are no filters, there is no editing here. It's just literally me recording. I've got a ring light on, and that is it. And this was not actually a professional model either. This is actually one of my friends. She's actually a makeup artist, so she volunteered to have her makeup done and be on my YouTube channel, which I really appreciated as well. So I've just used my NARS Longwear foundation. I applied it with a brush, and then I'm going in and tapping in with my beauty blender. Now your beauty blender should be damp, not wet, so really wring out and dry out the water. I use like a tissue just to really wring it out as well. So I'm just tapping away lightly, and I'm going to continue tapping until I am happy with the blend. So आपने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से इसकी टैपिंग मोशन से इसको ब्लेंड करना है. इसको हर जगह से आपने सही तरह इसको जज़ब करना है स्किन के अंदर. आइज़ के नीचे देखें कि मैं आइज़ के नीचे क्रॉस इतना नहीं गई. सो नेक्स्ट मैंने कंसीलर करना है, तो यहाँ पे मैंने टू फेस का कंसीलर इस्तेमाल किया वनीला, एंड देन यहाँ पे अपना वाइट बेस यूज़ करूँगी. So वो भी आपको दिखाती हूँ. So I'm just using the Too Faced concealer here in vanilla. I'm just using this just for the highlighted points, and under the eyes you can see I've just used it on the outer areas, and then I'm going to use my P. Louise base. So it's this one here. People keep asking. So P. Louise base, room at 0. So this is like a white color, but I'm using this because I don't have a white concealer. So I'll be honest with you guys, I've picked it up because I wanted to use like a white concealer, but I didn't have one. I have picked up like a slightly lighter shade, but I'm still finding like a white one that I want. But this works really well for me, so that's why I have been using it. But I would suggest you might find it difficult to work with some people. So obviously, if you're going to go out and buy it, you can think about it or go for a white concealer.
यहाँ पे मैंने वाइट बेस यूज़ किया, आपको मैंने पिक्चर दिखा दी है, वीडियो दिखा दी है। ये मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास वाइट कंसीलर नहीं है। वाइट कंसीलर मैं अभी ढूंढ रही हूँ कौन सा मुझे अच्छा लग रहा है, तो लेकिन ये मेरे लिए भी वर्क करता है। लेकिन थोड़ा सा कई दफ़ा मुझे लगता है आपको ये प्रोडक्ट मुश्किल ना हो यूज़ करने में, इसलिए थोड़ा सा सोच के ये लेना। नहीं तो अगर आपने लेना है तो वाइट कंसीलर ले लें अगर आपको मिलता है। यहाँ पे मैंने हडा ब्यूटी का टेंटोर यूज़ किया है शेड मीडियम में, अपनी लाइंस ड्रॉ करी और इसको आहिस्ता आहिस्ता अभी ब्लेंड कर दूँगी। So I'm using the Huda Beauty Tanto in medium. Now I find this shade, I like the product. I don't know if this shade is a little bit dark. Sometimes you have to be really careful. Like when I'm using it, I have to be quite careful in the amount of product I use and how I'm blending it, because sometimes I feel that I might need like the lighter shade. I need to see the shade and see whether it's too light or whether it's okay, or maybe I can blend them in together. But you can see it's quite a dark color even though it's medium. So I really take my time, and I kind of like I've placed the product on obviously, and now you can see I'm working upwards. I'm not bringing that product down onto the cheek area. What I'm doing is that line where it was, I'm shading upwards and really trying to blend that out. You've got to really take your time when you're doing this, and then it can get really muddy as well. So that's why you can see I've got that second line of concealer just above the jawline, so that helps me blend it out. सो यहाँ पे आपने ब्लेंडिंग करनी है। आप देखें यहाँ से मैं ये जो लाइन है ना, इससे ऊपर मैं रख रही हूँ प्रोडक्ट, वो यहाँ से नीचे नहीं आ रही। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कुछ उतरता है वो कई दफ़ा अपने हाथ पे साथ साथ मैं वाइप कर देती हूँ, लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट है ना, आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको ब्लेंड करना है। अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन थोड़ा सा मुझे कई दफ़ा ये कलर थोड़ा सा डार्क लगता है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ना कोई और कलर भी देख लूँ। कुछ लोग अपनी हाइलाइटिंग पहले ब्लेंड कर देते हैं, फिर अपना ये जो कॉन्टूर है, लेकिन मुझे इस तरीके से पसंद है। So on the nose area, I've just changed brush. I've just got a smaller fluffy brush, and I'm just going downwards and really blending the lines out. If you're enjoying these videos, please do give me a like on the video, and if you could leave me a comment, that would be amazing, because your comments and your likes and your views obviously make a big difference to this channel, to help me grow this channel. I would love to grow this channel a lot more as well, so it's really a lot of work that I put into these videos, and I'm not holding back on any information here. So this channel seriously is really good for you if you are into makeup and if you want to pick up things. Not everything will be obviously to your taste. Obviously I might do things that you don't like, but if you focus on the techniques and things like that, hopefully it'll make a big difference. And I get so many positive feedback from you guys here on YouTube and on Instagram as well, just telling me about your personal journey and how it's helped you. So that is always amazing. So thank you so much. I've just sprayed her face, by the way, with the Benefit Professional setting spray, and now I'm going into blend. So यहाँ पे मैंने प्रोफेशनल जो बेनिफिट का सेटिंग स्प्रे है वो इस्तेमाल किया, एंड यहाँ पे अभी मैं ब्लेंड किए जा रही हूँ प्रोडक्ट जो हाइलाइटर है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ यहाँ पे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर देना। आपके लाइक, शेयर एंड कमेंट से ही मेरा चैनल या मेरी वीडियो आगे जाती है, या इसको ना मेरे चैनल को हेल्प हो जाती है। इन वीडियोस पे काफ़ी ज़्यादा ओबियसली मेरा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं हर चीज़ आपको दिखाई जा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि नए नए लुक्स लेके आऊँ, नए नए प्रोडक्ट्स भी हों या नई टेक्निक्स भी हों। तो आपके कमेंट्स वगैरह से ओबियसली मुझे खुशी भी होती है। बहुत ज़्यादा मुझे पर्सनल कमेंट्स भी आते हैं इंस्टाग्राम पे भी, यहाँ पे भी, कि कि काफ़ी हेल्प हो रही है आप लोगों की, तो मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे सुन के। सो थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मैं इसको ब्लेंड की जा रही हूँ, दोनों प्रोडक्ट्स को। आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। आप एक प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे बहुत लाइट भी नहीं चाहिए अंडर आइज भी। So you can see that what I'm doing is I'm just tapping away, blending out the product. I love using this brush. It's the Real Techniques, and I need to remember, I did mention it before somewhere, and I will mention it in one of my brush videos soon as well, and I'll try and make a list of my brushes and try and mention them in my other videos if I can as well. But I just tap away. You can use a beauty blender here as well. I do sometimes, but I like to use this brush more. So now I'm just shaping the face a bit more and, smoothing out that contour a little bit that I've already done, and just blending everything away. So you have to really take your time here to do all this. There's a lot of product that we've used here, and obviously we've just got to blend it all away. What I hate seeing is really, really
harsh lines, and I do see that a lot, and I just don't. I mean, in pictures and videos, I think it looks fine, but like I said, when it's in reality, I think it should be a little bit more blended. So I've gone in with a blush. This is from the Makeup Forever palette, same one. So I'm just using, it's like a cream blush. So I'm just using that on. And this just helps with, I don't add in too much blusher later on as well. It just gives you that glow from within. And then I always go back and blend out the harsh edges here as well. तो यहाँ पे मैं क्रीम ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, जो मेरा मेकअप फॉरएवर पैलेट है, उसमें जो क्रीम ब्लश है इसको पहले लगा रही हूँ. एंड आज का ब्लशर का काफ़ी ज़्यादा वो है कि क्रेज़, कि ब्लशर ज़्यादा हो, तो वो थोड़ा सा हैवीली ऑब्वियसली इसको अप्लाई करी हो, इसको फिर मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर देती हूँ एंड देन इसके ऊपर पाउडर करूँगी. So now I'm going to show you how I use my Kryolan cake makeup. So I'm spraying this. So you've got to spray this. I normally use my MAC Fix Plus, but I didn't have that. I just couldn't find it. So I just used the Benefit Pore Freshener. And then I'm going to swirl my beauty blender. This is a mini one. And now I'm going to tap this in on all the areas that I want to set. Now what this will do is basically give you, it's like long lasting, it doesn't crease, and it makes it like pretty much sweat proof as well, and it really helps. So this is one way of using it. There are so many different ways and I'm going to show you, but this is how I'm using it. So यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि केक मेकअप जो पैनकेक मेकअप होता है क्रायोलन का, कैसे मैं यूज़ करती हूँ. यहाँ पे आप पानी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन सेटिंग स्प्रे से मैं नॉर्मली इसको स्प्रे किया था. फिर एक छोटा ब्यूटी ब्लेंडर लिया, बड़ा भी आप ले सकते हैं. जिन जिन जगह पर मुझे चाहिए मैं अब इसको लगा रही हूँ. सो अंडर आई पे, यहाँ पे जो लाइन पे ये जो स्माइल लाइन्स होती है, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं. इसको बस टैपिंग मोशन से भी मैंने पाउडरिंग नहीं की हुई. एंड फिर मैं अपनी मॉडल को बोलती हूँ कि अपनी आइज़ ऊपर ही रखें एंड देन इसकी सेटिंग कर दूँगी. लेकिन इस तरीके से आपका थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप हो जाएगा. ये जो क्रीज लाइंस है उस पर हेल्प होगी. जो गर्मियों का मौसम होता है उसके लिए जो होता है, तो ये इसका जो तरीका है ना, बहुत नाइस है. वो हैवी भी नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से इसकी सेटिंग भी हो जाती है. This actually is really good for your bride as well, because it really does make everything long lasting. I'm keeping her, I'm asked my bride, my model to obviously look up, and now I'm going in with some powder and I'm setting the under eyes because I didn't want her to look down. I don't want anything to crease. Just a very small amount of powder I'm using here now, and then I'm going to go and bake. So this is the key that you need to do. Very small amount of powder, get it set first, and then you go in with your baking. This step I don't do on every bride, I don't always use it, but it's something I really wanted to show you because the other video I had to take down due to issues. But obviously that video was actually really popular. A lot of people liked it, and so I'm going to use this a lot more as well and just show you. There are so many different ways of using this. And I know sometimes when we listen to Kryolan and we think, oh my god, it's heavy makeup, or a lot of people relate it to actually Pakistani Bridal makeup, where they've seen cakey makeup and they put it down to Kryolan, but it's not actually that. And what I think what you've got to remember is Kryolan is actually made for TV media and things like that, and if used correctly, it's actually really nice products. Well, a lot of their products are really amazing to use. So यहाँ पे मैंने हल्के अमाउंट से पाउडर मैंने इस्तेमाल किया, पूरे चेहरे को थोड़ा थोड़ा सेट कर दिया. ब्लशर पे नहीं गई थी, बस जो लाइन पे अंडर आइज वगैरह. अब यहाँ पे मैं सेटिंग करूँगी, हडा ब्यूटी का पाउडर इस्तेमाल करूँगी एंड बेकिंग करूँगी. यहाँ पे मैंने पाउडर पफ इस्तेमाल किया, काफ़ी ज़्यादा पाउडर यहाँ पे लगा रही हूँ, बस हल्के हाथ से लगा रही हूँ, ऊपर के बस यहाँ पे लग जाए. एंड यहाँ पे फिर इसकी सेटिंग अच्छी हो जाएगी एंड लॉन्ग लास्टिंग और ज़्यादा हो जाएगा. ये जो सारे स्टेप्स हैं ना, इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा एंड फ्लॉलेस होगा. मैंने पहले क्रायोलन पैनकेक मेकअप की वीडियो लगाई थी, तो वो उतार दी थी, उसको रिमूव करना पड़ गया था, प्रॉब्लम हो गई थी कोई, तो उसको लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी वीडियो. एंड मैंने कहा आप लोगों को एक तरीका इस दफ़ा फिर दोबारा दिखा देती हूँ. एंड देन ऑब्वियसली एक और 2-3 और वीडियोस भी लेके आऊँगी, क्योंकि इसके ऑब्वियसली तरीके बहुत ज़्यादा हैं इस्तेमाल करने के लिए. अगर अच्छे तरीके से आप यूज़ करोगे तो केकी भी नहीं लगेगा. तो यहाँ पर मैं अभी अपना कॉन्टूर कर रही हूँ मैक का स्टूडियो फिक्स से. I'm just contouring here using the MAC Studio Fix Plus here, shade NC40 I think it was. And then underneath the eyes, while my powder's on, this is when I do the under eye makeup as well. So I'm just giving her I'm just smoking out the eyes.
तो यहाँ पे अंडर आई का मैं कर देती हूँ, जो भी कोई फॉल आउट है यहाँ पे सारा पाउडर में मैं स्वाइप कर सकती हूँ और पता नहीं चलेगा. I'm just actually using the colour that was the very first colour I used on her eyes initially. And you can see I'm taking the product outwards and I'm blending it in with the top side of the eyes as well. So I merge it all together. And then I've just switched brushes and I've gone in with a very dark brown now, and I'm just going right underneath the lash line and just smoking that out again. तो यहाँ पे मैंने छोटा ब्रश लिया है, यहाँ पे एक डार्क ब्राउन सा लिया है, सेम जो जैकलिन हिल का पैलेट है. ये सारा आई मेकअप मतलब एक ही पैलेट से हुआ है, सिर्फ ऑब्वियसली ग्लिटर एक और कंपनी का है. So now I'm going to use my MAC Studio Fix and my Charlotte Tilbury mixed together, and I'm going to buff this out. The reason I'm using both is because my Charlotte Tilbury is in the shade medium, and I need the fair shade, which I've not ordered yet, and my MAC Studio Fix is obviously lighter, but I like the finish of Charlotte Tilbury, so I mix them both together. So that's why I'm using both. So I'm tapping this in and then sweeping it away. So यहाँ पे मैंने मैक स्टूडियो फिक्स यूज़ किया है, पाउडर एंड शार्लेट टिलबरी का मिक्स करके, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो शार्लेट टिलबरी है वो मेरे पास शेड मीडियम है, लाइट फेयर नहीं है, एंड मुझे थोड़ा सा फेयर यहाँ पे कलर चाहिए था, इसी दोनों को मिक्स करके किया. नहीं तो वैसे नॉर्मली मैं खाली शार्लेट टिलबरी या खाली ऑब्वियसली मैक का भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इन दोनों को मिक्स किया. तो आप देख लें कि इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छे तरीके से आ रही है. So you can see how flawless everything is looking. I've blended it away, I'm sweeping across everywhere, and I'm also just touching up, you know, like under the contour and things like that. And again, so it's all blending. So then I'm just adding on my blusher. I think this one was from Bare Minerals. तो ब्लशर इस्तेमाल कर रही हूँ बाय मिनरल से, मैंने ये यूज़ किया है, एंड उनके प्रोडक्ट काफ़ी नाइस होते हैं. So now I'm just going back in with the under eyes, and I'm just smoking everything out, making sure everything looks flawless, there's no patchiness and things like that. Do follow me on Instagram as well. My Instagram is Shazma MUA. If you need to contact me, my email details are in the description box, or you can send me a DM on Instagram as well. I've just used a Dior highlighter. I've not used this before. It's a new purchase that I bought a few weeks ago. It was very pretty, so I just used that. Inner corners I'm just using Doll Beauty highlighter. तो यहाँ पे मैंने डियोर का हाइलाइटर इस्तेमाल किया, पहली दफ़ा यूज़ किया, वॉज नाइस एंड प्रिटी था. एंड डॉल ब्यूटी का इनर कॉर्नर्स आइज पे ना थोड़ी सी हाईलाइटिंग दे रही हूँ. सो यहाँ पे अभी लिप्स पे आ गए हैं, तो लिप लाइनर कोक है, इसको इस्तेमाल कर रही हूँ. सो आई यूज़ दिस लिप लाइनर ऑन almost all my clients, all my brides, and the reason is because I've spent a lot of money on lip liners, and I find that actually this one colour and one brand just helps me do it. I mean, I don't use a red lip liner when I do a red lip. I just use this one, and it just works because one, it goes onto the lips, because a lot of the lip liners do not, they're not creamy enough, they don't, or they break and things like that, they don't line your lips properly. And I've gone through so many lip liners, and this just works for me because I end up taking my lipstick over the lip liner a little bit anyway, so it just gives me a slight shape. And then I've gone in with the
a nude lipstick here. So if obviously you feel that you want different colours, you can do, but you've noticed probably in the last few videos all I've used is this one particular lip liner. तो यहाँ पे आपने लिप्स को लाइन कर देना है, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता लिपस्टिक लगा रही हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे आपने टाइम लगा के लिपस्टिक करनी है। लिप्स की शेप भी आप चेंज कर सकते हो अगर आपने करनी हो एज वेल। You can see how flawless she looks, mashallah. So in all my tutorials, what I'm trying to do is just help and guide you guys, because when I did this, I started this obviously 18 years ago. There was no one out there to help, and even now recently there's no one out there who particularly could like help me, or when I was looking for answers and things like that. And then with lockdown hitting and stuff like that, I was just getting a lot of people, you know, messaging me for advice. So I just thought it'd be nice just to show what I know and how I do things, and hopefully it'll help people. I'm still learning myself. I'm always learning something new. You know, I don't claim to know everything. I don't claim to be the best, but I do this, and you know, it is helping a lot of people. And if it can help you, and then you can make it into your own thing and make it amazing, then that's brilliant. So these are the final touches. I do this in every video. I'm doing the eyelashes, I'm going over the glitter, I'm going over the eyeliner, things like that. This is what kind of like makes your makeup really clean at the end then. So यहाँ पे final touches कर रही हूँ, mascara लगा रही हूँ, you know, glitter, eyeliner, सारा कुछ touch up करती हूँ. Mascara, I always use my brides or my models' own mascara. I hate using the ones. I just find there's not enough product. So whatever mascara they bring to me, I'm not fussed with what mascara they have, because I can work with any of them really, and you know, you've got your lashes on anyway, so it just makes a big difference. For me anyway, using their own mascara. Here I just topped up the glitter. I went in with a slightly lighter colour, but I can't remember which colour it was, so it's not the same glitter, it's the same glitter but just a different shade. But you can see by adding this, it gives it a bit more dimension. So at the end यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्लिटर और ऐड किया था. ये थोड़ा सा एक डिफरेंट कलर था, थोड़ा सा लाइटर येलोवी गोल्ड था. तो इस तरीके से ना दोनों गोल्ड्स को मिक्स करके तो इसकी जो फिनिशिंग आती है ना, बहुत ज़्यादा मतलब इसकी डायमेंशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है. So this was pretty much the final look. This was a hijab bride that I did, so I have added a hijab, and I will bring that tutorial for you as well. It's a very simple hijab that I did, but just one version that I wanted to show you guys. I will have more coming as well. So इसको मैंने ये हिजाब ब्राइड थी, सो इसको बाद में हमने हिजाब बनाया. फाइनल लुक आप देख लेना. ये एक बहुत सिंपल मैंने हिजाब ब्राइड की थी. आपको और तरीके भी दिखाऊंगी हिजाब कैसे मैं करती हूँ. इसमें बेसिकली हमने कोई वॉल्यूम वगैरह नहीं दिया था, लेकिन आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए, एंड इंशाल्लाह फिर इसका हिजाब ट्यूटोरियल भी ले आऊँगी. अल्लाह हाफिज़.